Good evening, namaskar, adab. Warm welcome to another special edition of Talk to Bhupen. Folks, we really are in no man's land. Let there be absolutely no doubt about this fact that what we are looking at today and where we are today, I think is a situation, if I was to say that this is completely uncharted territory, completely a territory where none of us have any clue as to what we're really up against. I think that it would be really stating the obvious. On Talk to Bhupen tonight, as we stream across all social media handles, and as I welcome our two big guests today, Dr. K.K. Agarwal, a friend of Talk to Bhupen, has been on many of our shows on television earlier, and Dr. Trupti Gilda, who's joining us live from Mumbai. As I welcome both of them, I ask this question to myself, that where are we in our fight against Corona? Tonight, folks, we've lined up some statistical points for you because I'm worried. I'm worried today whether we are already looking at the possible emergence of a second wave of COVID-19 in India. I'm worried today. I'm worried today about exactly what is going on despite this lockdown. Why is it that these numbers that you're looking at, why is it that these numbers are continuously increasing? The number of confirmed cases in terms of pure percentages, and that's why we often say the statistics only reveal half the story. In terms of pure percentages, you are looking at a scenario where the growth is happening 6.6% on a per day basis. But then, if you look at the second statistic, which is, and all these numbers are coming via Shamika Ravi, one of the most well-known economists today, and she's been doing an absolutely fantastic job, courtesy Brookings Institution, trying to look at exactly what's going on. Look at the number of active cases as of 6th of May and see how dramatically. So let's say that when we were at around about 10,000, we hit the lockdown mode. And from that 10,000 to over 50,000, see how quickly and see how sharply the graph is increasing. This despite the fact that we were in lockdown. And why do I say that we could very well be looking at the emergence of a second wave? We're not talking about peak. We don't even know whether we've hit the peak. We don't know whether we've hit the peak. We don't know what this peak will be. Look at the next slide, and it will give you an even better understanding of just why we need to be very worried. Because this COVID-19 is spreading up very, very quickly. And this data is coming via the Center for Disease Dynamics, Economics Policy in Washington, D.C. Look at what it actually states. That with the speed at which we are growing, if it continues in the same way, you could well be clocking the total number of positive cases across the country at 140,000 up to 20th of May. And imagine where we'll be if we continue with this speed. And mind you, and let me remind you, and we've said this on multiple occasions, the real problem with India still is we are not testing enough. Because we're not testing enough, therefore, we are still going in this direction. Imagine if we were to continuously increase the rate of the speed of testing as well. Just imagine where we will end up being. Now, the other point, which is of more concern to me today, and then I'll bring in all our doctors as well, is that while on one hand the speed is moving in this direction, what is this level of our preparedness? And that's the next slide that I want to look at closely. If we were to purely look at it in terms of the level of preparedness of our system, in terms of how many beds we have, in terms of how many ventilators we have, in terms of whether, the number of doctors that we have, where do we go? The race to 50,000 positive cases in days. Now, this figure, if you look at it, this figure will give you some kind of a relief, because it makes you look at the story of India vis-a-vis the story of the world slightly differently. That it has taken 99 days. So while on one hand we say that, well, we're not testing enough in comparison to US or Europe, the number of days which it has taken for us to cross this 50,000 case, 99, the number of days for the US, 63, the number of days in Italy, 51. So does it mean that India is better off? Look at what happens in terms of our preparedness, in terms of the number of beds that I was talking about, in terms of number of hospitals that I was looking at. There is a problem in terms of our overall preparedness.
As of now, India has approximately 1.9 million hospital beds. We have 95,000 ICU beds. We have 48,000 ventilators. This includes both public and private sector. How do we build up? I mean, should there not be 10,000, 10 lakh ventilators? I'm sure this number that we have, must have been updated, and I'm sure Dr. Agarwal will have more on that. So let me straight away bring in Dr. Agarwal first, and let me hear from him. Dr. Agarwal, my fundamental question, on one hand, I look at the status of India at the loss of economy, $120 billion loss, and this is being projected by Barclays, which says that in this over 40-day lockdown period, Indian economy has already clocked a loss of $120 billion. Our manufacturing index has fallen to our worst ever, 27.4, even worse than where we were in 2008 when the economic catastrophe was staring at us in our faces. In this kind of a scenario, Dr. Agarwal, answer my most important question. Have we hit the peak, or are we looking at a second wave today, Dr. Agarwal? So let me go one by one. First of all is that the time has come to live with Corona, no more lockdown. And we must think of positive. Instead of talking the term lockdown 3.0, we should talk about live life with Corona 1.0. We have to live with it. That's one. Number two is somehow or other, we don't know. The Asian mortality is lower than the mortality in the Europe and in the US. If the mortality in Asia is 3, then in the US it is around 6, and in the Europe it is around 10. I'm not talking about the corrected mortality. I'm talking about the mortality means number of deaths today versus number of cases today. Actual will be number of deaths today and number of cases 14 days back, because it takes 14 days for a person to die. If I take that, our mortality is 6, US mortality will be much higher with that. This is number 2. Number 3 is somehow or other, even today, our death rate is only 1 per million population. That means 1 death per district compared to other countries, which is very, 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 very high. So we don't know what is protecting India as far as death is concerned, whether you do a testing or not. Death cannot be overlooked. You cannot overlook a situation like New York or a situation like Italy, where thousands of bodies are lying in a church to be cremated and there is no place. So I don't think so. We are heading towards that, but we are worried. Our worry is in the last 4 days, we are having 3,000 cases per day. That's a matter of worry to us, because the worst is yet to come, because the people, when the lockdown is going out and people who are coming to buy the alcohol, that cases will add up after 5 days. That means somewhere or the other in the last 7 days, people have disobeyed the lockdown. But Dr. Agarwal, isn't that the problem? So let me stay with that. Isn't that the problem, Dr. Agarwal? Yes, it is a problem. Because and that's the point. That's the point, Dr. Agarwal, that it could well be. It could well be that you may well be staring at a scenario where the overall number of positive COVID cases could well cross 1 lakh. So if it has to, 1 lakh, no, it has to. You cannot avoid that. 50,000 will become 1 lakh, 1 lakh will become 2 lakh, because it is only, you are only delaying the peak doubling rate. The doubling rate may be 11 days or 12 days or 13 days or 14 days or 15 days. But that 50,000 has to become 1 lakh. That 1 lakh will become 2 lakhs. Unless we have, see, I'll tell you one more thing. We all talk about R value. And we say R value, we still don't know what the R value is. If we take the R value of 3, our herd immunity will come with 66% of the infections come. But if we see the experience in New York, approximately 20 to 25% of the population has already been affected and a decline has started. Maybe the R value is 1.5 and we require 25% of the population to get infected to get the passive immunity, maybe. So therefore, maybe that over a period of time, with number of cases, 25% of the population will get infected, whether this year or next year, whether in this month, whether in 6 months, and slowly a passive immunity will come in. Still, we don't know. It may be 29%, it may be 66%, because we still don't know exactly the R value. The formula is R0 minus 1 divided by R0. That is the number of percentage of population to be infected. So at this particular moment, we are worried. Definitely we are worried, but no more lockdown. I told you on that day also that no more lockdown.
No, fine. So let's come to a conclusion. Answer is live with corona with a social distancing. No, social distancing, all very well, but irresponsible behavior. And we've seen that. And Vinod Kapri, our friend, is also joining us. And Vinod will talk to us about his documentary that he has made in a short while from now. Good evening and welcome, Vinod. I hope you can hear us loud and clear. Yeah, I can hear you, Bhupen. Lovely. Good to see you. Good to see you, Vinod. I'll be with you in a couple of minutes. I'm just trying to settle this question first with the doctors of the panel. So let me bring in Dr. Trupti Gilda as well. Doctor, look at what Dr. Agarwal is saying today. Basically, Dr. Agarwal is telling us, Trupti ji, that this 50,000 figure will become 1 lakh. This 1 lakh figure will become 10 lakh. Now, if this 1 lakh figure will become 10 lakh. I never said 10 lakh. I said 2 lakhs. 2 lakhs. Well, 2 lakh may become 10 lakhs also. No, we don't know. We don't know where we'll be. That's what I'm saying, that maybe we're in uncharted territory. So therefore, I ask you, Dr. Trupti, with this situation, the way the situation is unfolding in places like Dharavi in Mumbai, what we have seen, in terms of alcohol vends and the irresponsible behavior, do you think that the worst is still ahead of us? Have we peaked in terms of overall number of cases? So one thing for sure is that we definitely haven't peaked. We even towards like 5-6 weeks of lockdown, we are still seeing increasing number of cases, and every next day we see that we've broken the record for the previous days. So that is true. What Dr. Agarwal says is right, that 50,000 will become 1 lakh and 1 lakh become 2 lakh. What's important to understand is how fast are we going to double? And with the present trend, with the present health infrastructure, even in a city like Bombay, already overburdened, where hospitals are full, ICUs are full, what is going to happen is, if we are going to see numbers increase so rapidly, we are going to see more and more and more mortality, not but in the non-COVID patients. And that is our biggest fear about the peak or the rising graph. Is our healthcare capacity getting overburdened and surpassed by the number of cases? And we know that this number is probably an underestimate, because we really don't know what the true numbers are. We aren't testing enough. So the most important thing for the next few weeks, months, probably a year, is going to be ramping up testing. There is just no excuse to that. We have to get going with that. We've had 6 weeks of lockdown, and unfortunately, we still don't have rapid tests the way that they should have been available. We are still not testing like all the other countries, given our population, given the dynamics of our population. We know that we have people, we have clusters of areas like Dharavi. We know we have very special problems of our population, like, now we fear that we are going to see a peak in all the tier 2, tier 3 cities and the villages once the migrant laborers move there. So we know that this epidemic is gone to every nook and corner of the country. So if it has gone, Tripti, that's my fear, Tripti ji, that if this epidemic has gone to every nook and corner of this country, and if the status of our economy is this, I mean, can we imagine what will happen if we were to be crossing this figure of 1 lakh, 2 lakh positive cases? Is our healthcare infrastructure system, is it geared? What has this lockdown really provided our healthcare system with? Then I'd like to know from you, Trupti ji. Unfortunately, a simple answer to that question is our healthcare system up to the mark today? And the answer is no. We know that. Even in a lockdown situation, if our ICUs are full and people have to wait, and you will read this, you will hear from people. We are seeing this in our own city with our friends. We have to wait 3 days and 4 days to get into the hospital. So it is a fearful situation. We understand that. And just to continue on what I was saying, is that the only 2 things that will help us survive this is ramping up testing and doing all that we can to ramp up the healthcare infrastructure in the country. It has, and it's going to be multi-pronged. It will be getting non-COVID hospitals to turn into COVID, which means getting the infrastructure, the training of the personnel. We will have to have a lot of quarantine facilities. If we see, in a city like Bombay, we are just probably in the last 2 or 3 weeks, we've got big quarantine facilities. We did not have that 5 or 6 weeks back.
isolation or quarantine facilities are going to be very important, because that's where we will be able to keep asymptomatic or mildly symptomatic people, while the moderate or severe cases can be treated in the hospital. And that triage is going to become more and more important to reduce the mortality in this disease. All right. Final question to you, Dr. Agarwal. You gave us the I think a possible scenario that the number of positive cases could well end up being over 1 lakh. But I want to know what would be a peak according to you, Dr. Agarwal? Would the peak be 1 lakh? Would the peak be? I'm just looking at these speeds. The speed with which we have the number of positive cases have grown. Do you go by this figure that up to end of May, if we continue, we will end up talking 3 lakh figure? There is nothing like a peak of a country. Peaks will always be of a different states. You will have a different peak at Bombay, in Delhi, in Indore. Every state will have its own peak. You can't compare the whole India as a peak. So, for example, in Bombay, maybe the peak is already there. Maybe in Delhi, when Tripti says that the beds are not available, that's one of a sign of a peak, that the infrastructure is going bad into the shape. But in the whole country, we are not going to have the same phenomena, because the rates will be different, the weather will be different, the humidity will be different, the rainfall will be different. I don't think so that a peak will come in the country as a whole. If we see experience from past, the Spanish flu peak came the next year. It never came on the first year. In Australia, peak has never come. They have directly gone from phase 2 to phase 4. It is a variable thing. I can't say that the peak will come in India as a whole. The peak of every state may be different. Peak of every state may be different. Okay, let's leave it there. Thanks very much, Dr. Agarwal, for joining us, and thanks very much Thank you. To Dr. Tripti as well for joining us. Let me then move on, and let me bring in our friend Vinod Kapri here. Vinodji is a well-known filmmaker, and Vinodji has done an absolutely fantastic movie. I'm told it's a documentary which he has made. So welcome, Vinod. And I know that you've been traveling across parts of India trying to chronicle the stories of migrant workers. I myself have been in touch with various bodies. We've got video volunteers on multiple occasions in our programs, and they've given us a fair bit of an idea of exactly how bad the situation is. But Vinod, मैं चाहता हूँ कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक आपके थ्रू, आपके ज़माने के थ्रू इस कहानी को समझ पाए। इसे हिंदी में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, और इसको हम लोग आगे भी इसको रखेंगे हिंदी में ही। तो पहले ये बताइए विनोद कि ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से जा रहे थे, इनकी क्या जर्नी थी? भूपेन, थैंक यू सो मच। भूपेन, ये बात है 13 अप्रैल 2020 की, आज से करीब 3 हफ्ते पहले की, जब ये इनमें से कुछ मजदूरों ने की कहानी के बारे में ट्विटर पे किसी ने लिखा था कि ये करीब 30-35 मजदूर हैं जो कि गाजियाबाद के लोनी में रहते हैं, और इन्हें राशन नहीं है, इनके पास खाने को नहीं है, और साथ में उनका उसमें एक नंबर था। तो मैंने उस नंबर पे संपर्क किया और उनसे पूछा, तब उन्होंने बताया कि उनकी क्या स्थिति है, और फिर मैंने उसको ट्वीट किया, उनकी व्यथा को, उनकी कहानी को। तो उसके बाद कुछ उनके पास मदद आई, यूपी पुलिस ने भी उसको रिस्पॉन्ड किया, लेकिन उनके पास सरकार की तरफ से मदद नहीं आई, कुछ इंडिविजुअल्स ने मदद दी। 2 हफ्ते तक उनके साथ में संपर्क में रहा, कुछ उनको 2 दिन 3 दिन के राशन मिलता रहा, लेकिन आखिरकार 2 हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे एक दिन इन्फॉर्म किया कि हम लोग, अब सब्र हमारा खत्म हो गया, और हम लोग ने 2 दिन पहले अपने सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। हमने सेकेंड हैंड साइकिल्स खरीदी और हम अपने गांव, यहाँ से 1232 किलोमीटर दूर सहरसा हमारा गांव है, वहाँ जिला है, वहाँ के लिए हम निकल गए। तो मैं बहुत शॉक्ड था कि ये इतनी बड़ी यात्रा ये लोग साइकिल से करने जा रहे हैं, और ये एक इंसान के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, एक फिल्मकार के तौर पर, ये मुझे अपनी भी एक नाकामी लगी कि मैं 2 हफ्ते से इनके संपर्क में था, लेकिन चाहते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर पाया। मैंने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, देश में लॉकडाउन है, कोरोना का संकट है, कभी भी संक्रमण हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ मरने से अच्छा हम अपने गांव जाके मर जाएं, यहाँ हम लोग भूख से मर जाएंगे, और अब हमारा निकलना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग निकल गए। तो फिर मैंने इनसे बात, हाँ, ये आपने कुछ विनोद जी की कुछ ये तस्वीरें हैं, और नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सारे प्लेटफॉर्म्स इस कहानी को सुनने में बड़े इच्छुक होंगे।
तो क्या इसमें कोई स्टेटमेंट भी है विनोद? क्या हम इसका ऑडियो हम लोग इसका चलाएं? क्या कोई स्टेटमेंट भी कोई है, कोई बात अपनी रख रहा है कोई इसमें क्या? हाँ, इसमें मैंने तकरीबन सभी मजदूरों से बात की। हम लोग करीब 7 दिन इनके साथ रहे, 7 दिन 7 रात। तो आपके पास वीडियो है तो आप उसको प्ले कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं लेट मी, तो एक बार प्रोड्यूसर को मैं अपने बोलता हूँ, एक बार ये लेट्स जस्ट प्ले दिस वीडियो और फिर आप उसके बाद आप बता सकते हैं। आइए देखते हैं कि विनोद जी ने दरअसल क्या रिकॉर्ड किया है। बताइए, आप गाजियाबाद से सहरसा की जर्नी की यात्रा आप साइकिल पे कर रहे हैं, तो हमारे प्रोड्यूसर्स ये वीडियो चलाएंगे और हम लोग विनोद जी के पास उसमें दोबारा आते हैं। लोकेशन चेक करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। वो पीछे के लोग देख लो, आ रहे कि नहीं आ रहे वो। रास्ता ठीक है? हाँ ठीक है। कैसे पता? लोकेशन से फोन से लोकेशन चेक कर रहे हो? लोकेशन बीच में चेक करते रहते हो? हाँ चेक करते रहते हैं। एक हाथ से साइकिल चलाते हैं, एक हाथ से लोकेशन चेक करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। ये जो वीडियोस जो हम देख रहे हैं, तो क्या आप भी इनके साथ क्या साइकिल पे थे क्या आप भी? नहीं, मैं साइकिल पे नहीं था। मैं और मेरे साथ जो मेरा क्रू था, हम लोग कार पे थे। लेकिन हम लोग लगातार इनके साथ थे। मतलब हमने इनको 1 सेकंड के लिए भी फिर उसके बाद इनको हमने नहीं छोड़ा। हम लगातार इनकी जर्नी ट्रैक कर रहे थे। 5-10 किलोमीटर इनके साथ रहते थे, फिर 1-2 किलोमीटर आगे जा करके फिर हम रोक लेते थे, फिर हम इनका इंतजार करते थे। तो पूरे वक्त हम लोग ये सुबह 5 बजे अपनी यात्रा रोज सुबह शुरू करते थे और रात को 12 बजे अपनी यात्रा खत्म करते थे। तो उन 5 बजे सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक हम लगातार इनके साथ रहते थे। और तो जहाँ ये विनोद, आप जब चूंकि आप इनके साथ थे विनोद, और मैं देख रहा हूँ इन सबने साइकिल के पीछे जो बोरी है, इस बोरी में क्या था? ये एक्चुअली इस बोरी के अंदर ये ना सीमेंट के बैग हैं। और सीमेंट के बैग के अंदर इनके अपने व्यक्तिगत बैग हैं। उन बैग्स में इनके अपने कपड़े हैं। तो ये बैग इन्होंने सीमेंट की बोरी के बैग इसलिए रखे हैं कि इनको लग रहा था कि रास्ते में बारिश होगी, तो इनके जो अंदर के जो बैग हैं और जो कपड़े हैं वो भीग ना जाएं, इसलिए इन्होंने सीमेंट के बैग से उनको ढक दिया, सीमेंट के बैग से उसको कवर कर लिया। बाकी इसके अंदर इनके कपड़े हैं और जूते हैं और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं, कपड़ों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। लेकिन विनोद भाई, 1200 किलोमीटर तो बहुत होता है। मैं सोच के मैं हैरान हूँ कि बताइए, लोनी से सहरसा इन लोगों ने साइकिल पे यात्रा की, तो बीच में खाने पीने की क्या व्यवस्था थी इन लोगों की? खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी भूपेन। बल्कि जब इन्होंने मुझे बताया था तो मैं भी बहुत चौंक गया था, और मैंने इनको बहुत समझाया कि आप लोग को नहीं जाना चाहिए, इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, आपकी व्यवस्था यहीं पे कुछ और करते हैं। लेकिन ये लोग तो खैर अपनी जिद पे कायम थे। खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जगह जगह ढाबे और जब सारे होटल वगैरह सब बंद थे। तो हम ये करते क्या थे कि हम लोग भी चूंकि साथ में थे, तो रास्ते में कई लोगों ने इनकी मदद की। जैसे एक जगह पे पीने चाय की दुकान थी, तो उनको पता चला कि ये लोग लड़के, ये 7 लड़के जा रहे हैं, सहरसा जा रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ आलू रखा हुआ है, आप लोग इंतजार करें, मैं ना इनके लिए 25-30 समोसे बना देता हूँ। तो उस व्यक्ति ने बदायूं के पास इनके लिए समोसे बना दिए। तो ये इस तरह से इनको मदद मिलती थी। और चूंकि परचून और जनरल स्टोर्स खुले हुए थे, तो हम लोग जो ब्रेड वगैरह लेते थे, वही ब्रेड हम लोग शेयर कर लेते थे। जो ब्रेड हम लोग खाते थे वही ब्रेड ये लोग भी खाते थे। तो एक तरह से हम दोनों एक दूसरे के साथी बन गए थे, क्योंकि हमें पता था कि इस सफर के हम इनके साथी हैं और इन्हें पता था कि इस सफर के हम इनके साथी हैं। तो एक तरह से हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो सिर्फ मेरे लिए सिर्फ एक किरदार नहीं थे, मेरे लिए वो एक साथ के तौर पे भी थे कि जब तक इनका साथ है हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन विनोद भाई, ये समझाइए मुझको कि हम लोग देखिए, इतना हम लोग फोकस करते हैं और इतना सरकार, इतना ये जो सारी जो पीएम केयर फंड है, और ये जो इस प्रकार के जो पूरे जो वाकये हैं, जो सारी फैसिलिटी जो सरकार कह रही है, मैं बस देख रहा हूं कि फेसबुक पे इतने लोग कमेंट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो हम दिखा रहे हैं ये सब वो चीजें हैं जिनको सरकार को, जिनके बारे में सोचना चाहिए।
तो मैं तो मानता हूं कि जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब प्लेटफॉर्म्स को इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्रीज उन लोगों को दिखानी चाहिए। लेकिन विनोद जी, इस पूरे सफर में ये बताइए कि समय कितना लगा और क्या कहीं आप लोगों को टेस्ट नहीं किया गया कहीं बीच में क्या? क्योंकि मैं भी जब मैंने थोड़ा दिल्ली से बाहर निकलने की कोशिश की तो मेरी टेस्टिंग हुई थी जगह जगह। टेस्टिंग की के बारे में कुछ बताइए अगर हुआ हो तो। 7 दिन और 7 रातों की ये पूरी यात्रा थी और लखनऊ पहुंचने से पहले एक जगह पे थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी, वहां पे थर्मल स्क्रीनिंग हुई थी। इन मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग वहां हुई और उनके साथ में हमारी भी हुई। इसके बाद जब हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा में गोपालगंज में एंटर हुए, जो कि बिहार का इलाका है, बिहार का जिला है, तो वहां पर इन मजदूरों की इस स्क्रीनिंग हुई, थर्मल स्क्रीनिंग हुई और हमारी भी थर्मल स्क्रीनिंग हुई। वहां सभी की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी। इसके बाद जब हम लोग आगे भी बिहार के अंदर जब अंदर जा रहे थे इनके सहरसा जिले की तरफ, तो 2 जगह और रोका गया। तो वहां पर भी थर्मल स्क्रीनिंग तो हो रही थी। थर्मल स्क्रीनिंग हर जगह हो रही थी। ये पूछा जा रहा था आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, और उसके बाद आगे बढ़ने दिया जा रहा था। तो जब बिहार में जब एंटर किए तब क्या हुआ? तो क्या इनको क्या क्वारंटीन फैसिलिटी में भेज दिया गया था क्या, चूंकि ये लोग दिल्ली से आ रहे थे या गाजियाबाद से आ रहे थे? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे ही ये लोग बिहार सीमा में एंटर किए, तो गोपालगंज एक जिला पड़ता है, उस जिले में इनको रोक लिया गया और उसके बाद सरकार ने और पुलिस ने इनको अपने संरक्षण में ले लिया और उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ से साइकिल से नहीं जाएंगे, अब आप यहाँ से 300 किलोमीटर की यात्रा आप लोगों को बस से करनी पड़ेगी और हमारे संरक्षण में करनी पड़ेगी। और उसके बाद इनकी साइकिल्स को छत पे रख दिया बस की, और उनको पुलिस के संरक्षण में इनको इनका जो गृह जिला है सहरसा, वहां ले जाया गया। और वहां से फिर इनके जो गांव है, उस गांव के पास के एक स्कूल में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, वहां पर इनको रखा गया। लेकिन वहां पे रखा गया और उस आइसोलेशन सेंटर में। लेकिन ये जो पूरी यात्रा थी, ये इनकी पूरी यात्रा बस से जो यात्रा थी 24 घंटे की यात्रा थी। और इसमें दुर्भाग्य ये था और दुखद ये हमने देखा कि इस पूरे 24 घंटे में इन लोगों को एक बार भी खाने को नहीं दिया गया, ना इनको पानी पीने को दिया गया। तो मुझे समझ में ये नहीं आया भूपेन की 5वां-6ठा हफ्ता चल रहा है लॉकडाउन का, और अब सरकारों को पता भी है कि उनके श्रमिक, उनके मजदूर अपने अपने राज्यों में वापस आ रहे हैं, और हम अब इतना एक बेसिक जो एक मूलभूत होता है कि खाना और पानी आप दे दें, तो 24 घंटे वो सरकार के संरक्षण में, जब तक वो सरकार के संरक्षण में नहीं थे, अपने आप उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, तब तक वो खा पी रहे थे, उनको मिल जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो सरकार के संरक्षण में आए, खासतौर पे बिहार सरकार के संरक्षण में, तो 24 घंटे तक उनको खाना नहीं मिला। और एक बार नौबत ऐसी आ गई कि सारे के सारे मजदूरों ने बगावत कर दी और उन्होंने कहा कि हम आइसोलेशन सेंटर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आप हम लोगों को भूख से ही मार देंगे। अति अति दुखद विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी मेरी आपको माय कांग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने थैंक कम यू। से कम इस प्रकार की कहानी को आपने हमारे दर्शकों के सामने आप लाए, और इसीलिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया है। ये टॉक टू भूपेन प्लेटफॉर्म इसलिए है ताकि विनोद भाई हमारे जैसे जो मित्र हैं, वो कहानियां जो टीवी चैनलों पर नहीं होती, वो कहानियां जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको सुननी चाहिए, उन्हीं सब कहानियों को बताने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। विल मीट थैंक यू यू। tomorrow night with another story. All the very best. Stay well, stay safe.